चलिए, so we start with refraction. The first topic that we'll discuss is the phenomenon. Okay, refraction. Well, reflection was when light rays hit a surface, reflective surface, and they're being sent back into the same medium. Here we're talking about, see, whenever light is passing through a transparent or a translucent medium, then all the rays never get reflected back. Okay, when light rays are hitting, ये भी एक question पूछ सकता है that if light rays pass through glass slab, is every ray getting refracted? No, reflection will happen. However, refraction will also happen. But if it hits an opaque surface, then either reflection might happen or absorption might happen. Refraction does not happen. Refraction means it is phenomenon is all about bending of light. Bending of light. Bending of light as it travels from medium 1 to medium 2. एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने में लाइट की जो बेंडिंग होती है उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. एंड दिस बेंडिंग इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट अक्रॉस द two mediums. Okay, across the two mediums. And another thing we should keep in mind that the bending of light happens at the interface of two media. At the interface of two media. Right. So one is reflection is all about bending of light, and the bending of light happens due to the difference in speed of light across two mediums, and it always happens at the interface of two medium, which means that if I have a separation between two mediums, let's say this is the interface. Okay, if I say this is my interface, and let this be medium 1, and let this be medium 2. These are what we are trying to see this medium from optics perspective. So optics means from the concept of light. So we say that these are optical medium. So when light rays will come, say suppose there is a light ray which is coming, the light ray will come and hit here. So there is a chance that either the light ray will go in this manner or the light ray may go in this manner. But in no way can you expect that this light ray is going to go follow its actual course of path. That is, you can't expect the light ray ऐसा जाना तो आप expect नहीं कर सकते. You can't expect the light ray to go in this manner, right? This bending of light which happens at the interface due to the speed of difference in the speed of light between two medium is known as refraction. More ways to understand, well, you can read the book. I'm not going that detailed because otherwise we'll not be able to finish. So what happens, it is not one ray, there will be a cluster of rays which are coming, and this ray, all the rays here have the same speed. So this ray hits the medium first, so it bends. By that time this ray comes and bends, so the entire thing bends out here. For our thing interest, for our subject matter of interest, we should be more concentrating on these words, this medium 1 and medium 2. Okay, till here any question on the phenomenon of refraction? Refraction is the, nobody will ask you those definitions, define refraction. ऐसा question कोई नहीं पूछेगा आज के ज़माने में. That refraction is the phenomenon of bending of light. Zoe, keep a light on, otherwise you're in subdued light in the room. I feel so. Okay, refraction is the bending of light as it enters from one medium to another medium, and the refraction always happens at the interface between two medium. दो medium के interface के बीच में ही आपका refraction होगा, and this happens because of difference of light. That means the light travels at a different speed in medium 1 and a different speed in medium 2. चलिए आइए इससे आगे चलते हैं और mediums के बारे में बात करते हैं, because this is important from our exam perspective, and then only we'll be able to answer question. Medium from the point of view, this is POV from the point of view of optics. I'm just talking from the point of view of optics. Okay, from the point of view of optics, mediums are classified into either rarer medium, okay, or denser medium. Now this is not mass density or mass rarity, this is optical density. We are talking about optically rarer or optically denser. So this concept itself is a comparative concept. Comparative, or it is a
relative concept. Relative concept means you can't say somebody is how much rarer or how much denser. We always do the comparison between two medium. Between two medium, one will be optically rarer as compared to the other, and the other will be optically denser. If the optical density of both the mediums are same, refraction won't be seen. हाँ, ये सब point छोटी छोटी है. Keep them in your mind. If the optical density of two mediums are found to be exactly same, then we will say that there is no refraction, and that optical density is something which we'll learn as refractive index. Okay, so you can have a rarer or a denser, and this is a comparative concept. So from the point of view of optics, we would say those medium, okay, those medium. Denser means, as I told you, always keep in mind medium which is denser. This medium is like a populated bus, and the light ray is like a child running to it. If the child runs, the child will not be able to run so speedily inside the bus because the bus is already populated. So what happens? The child slows down. So we will say that if light ray is entering from a medium, so definitely when the light ray is traveling out here, right now, this is also a medium, right? And I have said that this is, say, medium M1 and this is M2. And I have written M2 is optically denser. I've written that this is denser. So it is automatically understood that this medium is a rarer medium. You can't say this, you can't tag this medium as rarer. We say this is rarer as compared to this. ये हमेशा याद रखिए. वो बच्चा अच्छा है नहीं होता है, वो बच्चा गंदा है नहीं होता है. उस बच्चे के कंपैरिजन में वो अच्छा है या उसके कंपैरिजन. Comparatively, this is rarer and this is denser. So my light ray is moving from, my बच्चा is moving from free space to भीड़ भाड़ bus. बच्चा cannot run. Bachcha will slow down because it is denser. So what happens out here? I will say that the light ray will slow down. The light ray will slow down, and once you slow down, it is like a loss of energy जैसा सोच लीजिए. Okay, you have slowed down, आपकी energy वैसा kinetic energy loss हो जाता है. और जब आपका energy loss हो जाता है, you are unable to stand straight. You need to lean on. You need a support to lean on. And therefore we say that when a light ray goes from rarer medium to a denser medium, the light ray will slow down and it will look for support. This is not scientifically correct. Huh? This is only an aid for your memory. It will look for support, and this support is nothing but our normal. This support is our normal. It's like that walking stick for it. And so this light ray is going to bend towards the normal. तो ये पहला चीज लिख लीजिए. Rarer to denser होने से the light ray will, the speed of light will slow down and the light ray will bend towards the normal. How to remember? A child running from a vacant ground towards a speedy bus. The child cannot run so speedily inside and loses energy, as such looks for support. The support is nothing but the normal and normal. तो इसके drawing को अगर हम बनाने की कोशिश करें, so this is, say, our normal, and the light ray is coming from here. So this will be known as my incident ray. I'm not going that deep. I hope you understand. This is incident ray. This is the point of incidence. This is normal at the point of incidence. Always write normal at the point of incidence because normal बहुत जगह हो सकता है. Then if this is M1 as per our diagram, M1, which is a rarer medium, optically rarer as compared to M2, which is an optically denser medium, this light ray will bend towards the normal. This light ray bends towards the normal. Is this concept clear now? Right? And the opposite. If the light ray is moving from a denser to a rarer medium, so let's say we have a denser medium, and our light ray is now trying to move out from a denser to a rarer medium, and now we are trying to go to a rarer medium. Okay, this is a rarer medium. So it's like भीड़ भाड़ बस से आप खुली मैदान में चलोगे. So you'll run freely, you have all the energy. So what all things will happen up? The speed will go up. So no support is needed. No support. Again, this part is only for fun part. Don't write in your book. No support is needed. That means the light ray bends away from normal. Away from normal. ये दोनों चीज याद रखिए. Whenever rarer to denser, it will bend towards the normal. Denser to rarer, it bends away from the normal. No medium is rare. No medium is denser. They are always comparative when compared across two mediums.
यही रेयरर किसी और के लिए डेंसर बन सकता है ना। चलिए, and if the optical density of two mediums are found to be exactly same, then you will never see any bending across them. Okay, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. So since our concept about medium, we have understood medium, we have understood what is an optically rarer medium, we have understood what is an optically denser medium, then we have understood what happens to bending in either of the cases. In either of the cases, this is also something that we have understood. And the next thing that we would like to see is that what is the actual phenomena of refraction, some of the data that we would like to know. This is our interface. So we have an incident ray. So let's take one incident ray. Suppose my incident ray is coming from here. Sorry. Suppose the incident ray is coming from this medium. Now, my wish, the way I would like to explain it. So I'm saying that this is, say, this is medium M1, this is medium M1, and this medium is an optically rarer medium. This is a rarer medium, and this is medium M2, which is optically denser medium. When I compare between these two, so I should then try to make my normal at the point of incidence. So this is my normal at the point of incidence. My normal at the point of incidence. The angle made by the incident ray with the normal at the point of incidence, that will be known as the angle of incidence. This is my angle of incidence. I'm not writing beta. I hope you are able to understand. This is my interface between two mediums. This is my normal n dash, and let's say this is A and this is O. So AO is my incident ray and AON is my angle of incidence. Now we are moving from rarer to denser. So obviously I would expect the light ray to bend towards the normal. तो ये normal की तरफ bend कर जाता है. It bends towards the normal. So this, right? This is, so the angle formed. Now we will say the angle formed between the normal and the refracted ray. So let me name this as B. So OB will be known as my refracted ray. Refracted ray. Yeah. And this angle will be known as my R, as my angle of refraction. Not in your book, but just for your understanding, don't ever get, what you call, misled. अगर यहाँ पे angle of incidence रहेगा ना, law of reflection will always be valid. A reflection 100% is taking place to some extent. इसके अलावा रिफ्रैक्शन भी होता है. अभी हम चैप्टर में इसको नहीं पढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, राइट? और उल्टा साइड से बनाए तो कैसे बनाएंगे? लेट्स से इफ आवर इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम द व्हाट यू कॉल द denser medium. So this is my denser medium, this is my incident ray, and now I will make one normal out here. So this is my normal. And how does the refracted ray look like? Sorry, the refracted ray will be looking, because it's from denser to rarer, it will bend away from the norm. Same. And you can name them again, that this would be my angle of incidence and this is my angle of refraction. Clear? Right. And same thing. Now this is medium 1, medium 2. We'll see one more example, which is medium 1 to 1. That is where we will have a glass slab. Air to glass, again to air, 1 to 1. Okay. So, in fact, if you have a glass slab, I would always say, and anyone has a keyring which has got a laser in it, make the room dark and you just switch on your laser ray on the glass slab. You will see the incident ray, you will see the refracted ray, you will again see a parallel emergent ray. इससे बढ़िया example होता है नहीं, घर में ही कर सकते हैं. If anyone has a laser keyring or something, or kids have that, आप तीनों एक साथ करके बना सकते हैं. So let's see what happens when it is a glass slab. Okay, so this is my this is, say, a glass slab, right? Now rather than writing medium 1 and 2, now I'm writing air, and this is glass.
Glass is always optically denser than air, and this is again air. So we have a ray of light which is actually coming from air. So let's take my ray of light. This is my ray of light which is coming from air, and this is the first point of incidence. Okay, this is the first point of incidence. So I'll make a normal out here. So let me make a normal out here. This is the first normal. Okay, now just while making this diagram, remember one thing, you just need to concentrate. This is interface 1, the first interface. This is interface 1, IF1, because this is the interface between air and glass. So यहाँ interface 1 में क्या हो रहा है बेटा? Rarer से light denser में घुस रहा है. तो कैसा दिखेगा? Bend towards the normal. तो आइए इसको normal की तरफ bend करवा देते हैं. Let us bend it towards the normal. So it bends towards the normal. Once it has bent towards the normal, we get our second point of incidence. So we make our second normal. Okay. So the second normal is out here. And now this will be my interface 2. Interface 2, and this is again denser to rarer. अब glass से बाहर आएगा ray. कहाँ पे आएगा? Glass से ray is going to come to air. But see, this is also air, this is also air. And both this air have the same optical density. So you will see exactly the emergent ray or the refracted ray for the second surface will exactly be parallel. ये बिल्कुल parallel हो जाएगा with the original incident ray. Okay, it will be exactly parallel like this, exactly parallel. So in this type of a phenomena, we call this as incident ray, refracted ray, emergent ray. This is known as the emergent ray. And the amount that you got shifted, you must have got shifted, and that is called your lateral or parallel shift. Okay, so if I extend this one, the original path, so this was the original path, so the amount of shift that you underwent, okay, so the amount of shift that we underwent, this one and this one, this is known as your lateral shift or parallel shift. This much the light ray has shifted. But now I call this as incident, I call this as refracted. Which one? For this interface. For this interface, this is the incident ray, the refracted ray. Overall as a diagram, incident ray, refracted ray, emergent ray. Clear? Lateral shift. This is called a lateral shift. लेकिन ये पैरेलल होगा, हमेशा याद रखिए. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बोल देगा. Light enters from kerosene to glass to kerosene. So you will always see that the emergent ray, kerosene, glass, kerosene. Its concept is 1 to 1. 1 to 1 जहां भी हुआ या 2 1 2 जहां भी हुआ, there will always you will see it's parallel. ठीक है? So time now for us to also understand laws of refraction. Again, not going in depth. There are two laws. The first law says that the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie at the same plane. It's just same as the laws of reflection. All lie at the same plane. What is more interesting for us is the second law. Okay? Right. So the second law. Second law says that the sine of the angle of incidence over the sine of angle of refraction is said to be refractive. यहाँ से ध्यान देना शुरू कीजिए. Refractive index of the medium is known as the refractive index of the medium. This law is also known as Snell's law. अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए. Okay, sine of refractive index of the medium. Okay, Snell's law अपने जगह पे correct है. We are going to see some examples now. Now say this is my interface. Okay, this is my interface, and the medium I'm comparing is air, and I have some medium out here. I have some medium out. Because I have to justify this word, ये medium किसको बोल रहा है actually? What is this medium they are trying to specify? ऊपर वाला या नीचे वाला? So let's say I've got air. So light rays being incident from air. Try to understand it very nicely. Okay.
light ray is being incident from air to another medium. And remember one thing, air is the rarest, or vacuum. No one can be more rare than them. They are the rarest. So air से कोई भी light अंदर आएगा, it will always be a bending towards the normal. Pay absolute attention now. Huh? Air से any ray which is coming inside a medium, it will always bend. It has to bend because इससे ज़्यादा rare और कोई नहीं है. It is the rarest of all. So I go by my same diagram. I am making a normal out here, and I would see that the ray has bent towards the normal. So this is my I and this is my R. Snell's law यहीं पे कहता है that sine of this angle over sine of this angle, sine of I by sine of R is refractive index of the medium. Now this refractive index is represented by Greek letter, कोई mu से भी लिखता है. This is pronounced as mu, mu, mu. Somebody writes it as n, or somebody writes it as eta also. आपको जो मर्जी आप जैसे लिखिए, but do explain. This is called eta. So for simplicity, let's say we maintain eta as our symbol. Okay, I would say, or somebody writes it as n. So eta is my refractive index. Now, how do you write this refractive index? This is a refractive index of the medium. We always say of the medium. Now, I would write that this is refractive index of the medium, and I would call this as refractive index of medium. You always should maintain something called WRT with respect to what? With respect to is always the guy who is जहां से इंसिडेंट हो रहा है. Don't try to remember कि ऊपर वाला मीडियम क्या है. जहां से इंसिडेंट हो रहा है, कहां से इंसिडेंट हो रहा है? एयर से हो रहा है. So with respect to air, so we write it refractive index of the medium with respect to air. अब आपने respect किसको दिया है? आपने, now this is again for your memory, the fun memory. आपने respect दिया है air को, इज्जत दिया है, तो air को ऊपर बिठाइए. तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे with respect to air, refractive index of the medium with respect to air. जहां जहां आपने किसी भी मीडियम को एयर के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट दे दिया है, तब आपको ये एयर और लिखने की जरूरत नहीं है. हम इसे सिर्फ लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, बिकॉज एयर इज द बाप. एयर से एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा. इट इज द मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ ऑल. सो इफ यू आर, so I would say, how much do you bend with respect to Aparna? Okay, this much. How much do you bend with respect to Amulya? This much. How do I measure you? So let's take one fellow who is the benchmark, air. How much do you bend with respect to air? Say, suppose, sir, 20 degrees. How much do you bend with respect to air? Sir, I get bent by 30 degrees. That means I am more optically dense. Air के मुताबिक, are you trying to understand what I'm saying? ये air है. एयर के मुताबिक इनसाइड मी लाइट रे बेंड्स 10 डिग्रीज, इनसाइड अपर्णा लाइट रे बेंड्स 20 डिग्रीज. दैट मींस अपर्णा इज मोर ऑप्टिकली डेंस, सो शी इज द मोर डेंसर मीडियम एज कंपेयर्ड टू एयर. आई एम अ मोर rarer medium as compared to her, but I am also a denser medium with respect to air. She is also a denser medium with respect to air, but between us she is bending the light more, she is more denser. जब भी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, स्नेल्स लॉ हमें क्या हुआ? स्नेल्स लॉ हमेशा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है आपको, लेकिन बात आता है कि आपने कौन सा मीडियम लिया. यानी कि अगर आपका इंसिडेंस एयर से हो रहा था, तो दैट टाइम वी से दैट यू आर मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू व्हिच इवन यू विल गेट इन गूगल. से इफ यू गो टू गूगल एंड यू टाइप व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, Google is giving you eta glass measured with respect to air. How can Google make a whole sheet? Eta glycerin, eta oil, eta palm oil, eta sunflower oil, eta mustard oil. इतना थोड़ी बनाएगा आपके लिए, right? It's always to a standard. The currency of my country nowadays is compared to only dollars. अब हर देश के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कोई मायने नहीं देता है, कोई एक के साथ ही कंपेयर करो. So at that time, such sort of a refractive index is known as absolute refractive index. Absolute refractive index. Sin I by sin R हमेशा refractive index बताएगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने I किस मीडियम में मेजर किया. अगर आपने एयर या वैक्यूम में मेजर किया है, then sin I by sin R is telling you about
absolute refractive index. In such a case, you could have written mu of the medium, eta of the medium with respect to air. But ऊपर जब air होता है, we don't write, we just write eta medium. So the corollary is, if you see eta medium, that means it is air out here. Remember it, okay? And this is a standard value, right? So say if this was between air and say this was between glass, so we will say what is the eta glass, and eta glass is a standard. It is known as absolute refractive index because you are measuring with respect to air. आपको और यहाँ पे a लिखने की जरूरत नहीं है. Do we have a value in Google for this? Yes, 1.33 you'll get. That's standard. Understood? Now let's see the other perspective of, also I'm not taking off the screen away. Let's see the other perspective of what do you call Stan's law. अगला perspective भी देखते हैं क्या है. So the other perspective is, they say that sine of I by sine of R is equal to refractive index, and again I'll write that it is the Ri of medium. Now let me make my diagram again. So it's like this, and again say this is medium 1, this is medium 2. Tell me which medium is for the diagram is more optically dense. In this diagram, which is more optically dense? Hey, M2 ने ज्यादा बेंडिंग किया है. क्या हो गया? नहीं क्लियर करना है. मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा यहां से. अब तक आप क्लियर नहीं होंगे. चलो आपको और कंफ्यूज किया जाए. आप बताओ, आप कौन ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है? आप ही बोलोगे. M1 गलत हो रहा है. चलो समझते हैं. रे कहां से ट्रेवल कर रहा है बेटा? M1 से ट्रेवल कर रहा है. इस रे को एक्चुअली कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था. रे ने सपोर्ट ले लिया नॉर्मल के साथ, यानी रे कमजोर गिर गया है. रे बेंड किया है नॉर्मल की तरफ. क्यों बेंड किया? क्योंकि वो M2 पे घुसा है. यानी M2 एक भीड़ भाड़ बस है, तो M2 ज्यादा डेंसर मीडियम है. एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है आपको? जब तक नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे. वी हैव टू बी वेरी क्लियर. ठीक है. M1 खुला मैदान है और रे ऐसे जा रहा है. रे को इस तरह जाना चाहिए था, पर रे ने सपोर्ट ले ली. हमेशा याद रखिए, नॉर्मल के साथ यू सी द सपोर्ट रिलेशन. Okay, let's make one more diagram and let's see whether you have understood or not. Okay, only you will answer. Okay, only good. Huh? I never knew that it keeps everything. Okay, only you will answer. Okay, ऐसा कुछ नहीं. जब तक हम क्लियर नहीं है हम आगे नहीं बढ़ेंगे. Right? देखिए तो ये कैसा है. आप डिकोड करो और डिकोड करके मुझे समझाओ. ओनली आद्या, चलिए डिकोड कीजिए मुझे. इंसिडेंट कहां से हो रहा है पहले सोचिए. M1. रे ने M1 से निकला है. रे कहां प्रवेश कर रहा है? M2 पे प्रवेश कर रहा है. रे की हालत क्या है? रे हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी रे कमजोर गिर गया है. वहां पे एनर्जी खत्म हो गई, स्पीड खत्म हो गई. इसका मतलब M2 एक भीड़ भाड़ बस है, डेंस है. सो M2 इज अ डेंसर मीडियम, है ना. इसी ड्राइंग को अगर हम ऐसे पलट दें, पटेगियो, अगर इस ड्राइंग को ऐसे पलट दे, अब बताइए तो. अब इसको मैं M1 कहता हूं, इसको M2 कहता हूं. आप बताइए रे कहां से आ रहा है? मेरे सवालों का जवाब दीजिए और आप भी अपने आप को यही सवाल पूछिए. रे कहां से आ रहा है? M1 से. रे कहां घुस रही है? M2 पे घुसने पे रे की हालत क्या है? हाँ, उसने नॉर्मल को कहा मुझे तेरी सपोर्ट नहीं चाहिए, मतलब इसके अंदर एनर्जी आ गया है, इसने स्पीड पिकअप कर लिया है. यानी कि यहाँ पे ड्राइंग में M2 एक खाली मैदान या खाली बस है. ये रेयरर है. क्लियर आया? ठीक है. ऑल ऑफ यू, एनीवन हु हैज एनी आयोटा ऑफ डाउट, डू नॉट छुपाओ फाइल. छुपाओगे तो फंसोगे. चलो आगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो मैंने डायग्राम मिटा दिया. चलो बना लेते हैं फिर से एक बार, कोई बात नहीं. सो दिस is the diagram that I will follow now. Now look at the diagram, okay? And let's say it's like this, and say this is medium 1 and this is medium 2. Okay, now tell me, we always measure refractive index of a medium with respect to a medium, and that with respect to a medium is the medium where the light is incident upon, from where the light is incident upon. ये याद रखिए. Refractive index is measured of a medium
विथ रेस्पेक्ट टू अ मीडियम जहां से लाइट आ रहा है। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम मेजर करने की कोशिश करेंगे, वी विल से, नाउ यू टेल मी वेयर इज द लाइट रे कमिंग फ्रॉम? मीडियम 1. सो मीडियम 1 इज माय रेफरेंस. इट कुड हैव बीन एयर आल्सो. मैंने जानबूझ के पलटा दिया, आपको हमेशा आदत है ना ऊपर से आने की, ऊपर से नहीं आ रहा है, इस बार नीचे से जा रहा है, ठीक है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 पे प्रवेश कर रहा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 जहां से आ रहा है, इसको कैसे लिखेंगे? ईटा ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट, जिसको रेस्पेक्ट दे रहे हो उसको ऊपर बिठाओ, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1. आपका बुक कैसे लिखेगा? m1 ईटा m2 ऐसे लिखेगा. आप ये फॉलो करो, आपको इजी रहेगा. समझ में आया? अब ये क्या हो जाएगा? स्नेल ये कहता है कि दिस शुड बी साइन ऑफ i बाई साइन ऑफ r, यानी कि i अभी कौन सा हो गया? दिस इज i एंड दिस इज r. दिस इज व्हाट स्नेल सेज. सो लेकिन यहां पे एक चीज गौर कीजिए, ट्राई टू सी, isn't the medium from where the light is coming, did I specify this as air? No, it can be anything. It can be anything. So such type of a refractive index is called relative refractive index. Sorry, say this is water and say this is kerosene. Okay, so I will say the relative refractive index of kerosene with respect to water. केरोसिन ज्यादा रेयरर होता है. अब लेकिन आपको ये दोनों मेंशन करना पड़ेगा, द हेड एंड द फुट. डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू मेंशन बोथ हेड एंड फुट बिकॉज इट्स अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आ जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसको लेके. अब देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट हुई है नहीं. ओके, इफ आई राइट ईटा ग्लास, if I write eta air glass, if I write eta glass glycerin, and if I write eta glass and glycerin, if I write eta glycerin and air, which bacha? One bacha only, okay? Would like to take a dig of all of these and that bacha will speak. I'll keep mum. You may be wrong. सब समझाओ मुझे क्या है, एक एक करके आप बताना चाहेंगे क्या? बताइए, चलिए वान्या बताइए. This is the first one. Tell me what is the first one. Light is traveling. So she says this is absolute refractive index of glass. That is how we mention it. In this case, light is being incident from air to glass. This is the way we write it. You have a standard value for this in Google or whatever you find. What is the next one? How is it different from the first one? It's the same. Yes, it's the same one. The first one and the second one are same, but we don't have a practice of writing like this. But if see how you can get confused, but you're correct. This is absolute refractive index of glass. This is relative refractive index of glass with respect to air, which is also the absolute refractive index of glass. अगर आप एयर के साथ रिलेटिव कर रहे हो तो वो आपके एब्सोल्यूट की ही तो है, क्योंकि आप बाप के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, इससे बड़ा तो और कोई नहीं है. Have you understood? This is relative refractive index of glass. Full marks. Sir, this is relative refractive index of glass, but when you compare with air, sorry, you don't write air. You should write like this, and you should call it as absolute refractive index of glass. Yes, correct. Full marks. What about this? Glycerin to glass. So it is relative refractive index of glass with respect to glycerin. What is this? ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. ठीक है ना, उल्टा उल्टा हो रहा है सब. ये क्या है? Absolute refractive index of glycerin. So this is relative refractive index of glycerin with respect to air. इसको लिखते वक्त हम ऐसे लिखेंगे. और ये क्या है?
What is this? That's also air. No, this is refractive index of air 1. 1. Say absolute refractive index of air is 1. That's why it's taken as standard, na? Everyone else bends light more than air. So बाकी सबका refractive index air से कितना होगा? ज्यादा होएगा. Air कैसे confuse हो रहे हो? Air is the rarest. Everyone else bends the light more than air. So everyone else's refractive index will always be 1 point something. 1 से ऊपर ही होएगा. See, 1 minute before taking the question. The bending is directly proportional to the RI value. RI आपको बताता क्या है? RI आपको ये बताता है कि light कितना bend होता है. Now again questions which may come. Suppose somebody says the refractive index of say something like resin. कुछ भी एक बोल दिया. Resin is say 3.14. आपको ऐसे बोल दिया है 3.14. That means refractive index of resin, they have not mentioned with respect to 1. What? So you should say that this is the standard refractive, that is absolute refractive index of resin. Air के साथ compare हो रहा है. Air के मुताबिक ये 3.14 times light को bend करता है. Are you understanding? Your thing will become more clear. Just see like this. We know that kerosene is rarer than वाटर. ये सच्चाई है. केरोसिन पानी से ज्यादा रेयर है. ठीक है, पानी नहीं लेना है और भारी चीज कुछ ले लो. लेट्स टेक समथिंग मोर भारी, दैट इज ग्लिसरीन. अरे यार, ओके, लेट्स से ग्लिसरीन. केरोसिन इज मोर रेयर देन ग्लिसरीन. सो वेयर शुड लाइट बेंड मोर? In glycerin, light should bend more. Now just see what I'm writing. And you try to अब दोनों का हम वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं. नंबर 1, the first one is refractive index of glycerin with respect to kerosene. Air is coming, light is coming from kerosene, entering inside glycerin. Will you see more bending or less? You should see bending away or bending towards? Towards. How can you do this? This is rarer and this is denser. Light is entering from rarer to denser. Light will bend towards the normal. इस diagram में drawing ऐसा होएगा. Light will bend towards the normal. It's getting mutated. Okay. Light will bend towards the normal. Whose refractive index are you measuring in this expression? Glycerin's refractive index you are measuring with respect to kerosene. So let's say we get a value X out here. X. What about this? No, 1 by X बाद में. Don't rectify. What is this? This is relative refractive index of kerosene with respect to glycerin. So light is coming from glycerin, which is a denser medium, and light is entering kerosene, which is a rarer medium. Light क्या होगा? Towards the normal or away? Away from the normal. तो इसका refractive index मानो मेरे को Y आया. अब X और Y के बीच में रिलेशन बताइए. Reciprocal अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है. I don't want reciprocal data. I just want between X and Y what will be the relation. What is the inequality would you put? आप equal तो नहीं डाल सकते. Equal तो नहीं डाल सकते ना. And then what will you put? Which will be greater? Yx will be greater? Because as simple as that, you are measuring the refractive index of a denser medium as compared to rarer. So its refractive index has to be more. You are measuring the refractive index of a rarer medium. So X will always be greater than Y. ये चीज समझ में आया? ये हमें ये बताता है कि अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है. And say suppose on a nice fine day you replaced kerosene with air and you replaced glycerin with air, then what are you doing? You are measuring the absolute refractive index of glycerin
and you are measuring the absolute refractive index of kerosene. Do you agree or not? Whose refractive index will be more? Here also it will be more. Have you understood? अरे ये तो common relation है ना. When you're comparing with standard, my currency is stronger than the Pakistani currency. I am weaker to the US currency. Pakistani currency is also weaker to the US currency. So between, on that basis, you can find the relation between my currency and Pakistani currency also ना. आपस में मैं उससे भी strong हो ही जाऊंगा. वो अगर उससे Pakistani is weaker than America. I am weaker than America, but he is more weaker than America. So between me and him, I am more stronger than him. As simple. ये क्लियर हुआ. रेसिप्रोकल बात बाद में आता है, पहले तो इसको समझिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. क्लियर हुआ? अगर बट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट यू कैनॉट टेक अ चांस एवरी टाइम. Absolute data will always be absolute because you are measuring always with respect to air. Now we are comparing glycerin with respect to kerosene. Glycerin with respect to soap oil may be a different thing. At that time, who knows? Glycerin might be a rarer medium and soap oil might be denser. I am saying, for example. So relative पे कभी examples मत लीजिए. Examples are always good on absolute. Is this much clear? Okay. Yes. Eta air with respect to air. Air with respect to air. इसका मतलब refraction ही नहीं होएगा. 1 है. The refractive index is taken standard 1. Why 1? अब आप सोचो, बुद्धू का सवाल पूछियो. Eta with respect to eta, won't I be equal to R? So sin I will be equal to sin R will be equal to sin I only ना, तो ratio 1 हो गया. If there is no refraction, then I is equal to R ना. सीधा चला गया रे. क्लियर है? चलो अब आगे. और so refractive index of a medium 2 with respect to 1 is said to be, as per Snell's law, sin of I over sin of R. Remember that I means light, the ray enters from 1 to 2 as per this nomenclature. When you write 2 to 1 means 2 with respect to 1. The ray is entering from 1 to 2. ये आप याद रखिए, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा. ये हुआ Snell's law. Right? Okay. There is another definition of refractive index also. This is with speed. So we say speed of light. ठीक है? और यहां भी मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट. देखो टेक्निक, देखो कैसे याद रखते हैं. स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. अब यहां पे मैंने लिखा eta 2 विद रेस्पेक्ट टू 1. समझ में आया? ठीक है. ऊपर कौन है, नीचे कौन है? अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ. इसको देखो, एग्जाम में गड़बड़ी हो रहा है हमारे को. इसको मन मन में ग्लिसरीन समझ लो, इसको एयर समझ लो. ठीक है, इसको एयर समझ लिया. ये कैलकुलेशन आप भूल गए हो एग्जाम में. यू हैव फॉरगॉटन दिस इन एग्जाम. सर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ 1 है कि 2 है, हमारे को नहीं पता. कोई बात नहीं, आप ये बताओ, एयर और ग्लिसरीन में कौन ज्यादा डेंसर है? ग्लिसरीन ज्यादा डेंसर है. अगर आप ये एक्सप्रेशन देख रहे हो तो आप किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हो? ग्लिसरीन का. सो ग्लिसरीन बेंड्स मोर देन एयर. एयर टू एयर होने से डेटा कितना होना चाहिए था? 1. ग्लिसरीन है तो ये वैल्यू मोर देन 1 होना ही पड़ेगा. ये वैल्यू मोर देन 1 होना ही पड़ेगा. मन में ठीक है? इसको मोर देन 1 होना है. अब आप अपना एक्सप्रेशन ड्रॉ करो. इन द एग्जाम यू हैव फॉरगॉटन, ये आप भूल गए हो एग्जाम में. ठीक है ना? ये चीज भूल गए हो, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है. अब इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 1 करना है तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को ज्यादा करना पड़ेगा ना. एंड स्पीड ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा लाइट स्पीड किसमें ट्रेवल करता है? हाँ, एयर. बाकी सब उससे कम, मतलब एयर इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो भाई साहब एयर तो ऊपर ही जाएगा और दूसरा वाला नीचे ही आएगा.
then only this is going to be greater than 1. तो आपके मन का लड्डू फूटा, मन क्लियर हो गया. तो अभी आप एयर को मिटा दीजिए, ग्लिसरीन मिटा दीजिए, आप भी यहाँ पे 1 और इसमें 2 ले लीजिए, आपका फॉर्मूला बन गया. Did you understand? Even if you forget in exam, you can generate your own formula. Again, I am repeating. In the exam, I am trying to write eta 2 with respect to 1 in terms of speed of light. Speed of light. और नीचे भी क्या लिख रहा हूं? Speed of light. मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि सर ऊपर में 1 आएगा या नीचे 1 आएगा. I said no worries. Try to put some common बेवकूफी type mistakes or examples. बेटा आप यहाँ पे एयर ले लो और यहाँ पे ग्लास ले लो. Is there anyone who is more rarer than air? Not possible. Air is the BAP of all. Everyone else is denser. Here in this expression, I am trying to measure what? Again, I am writing for you. I am trying to measure Ri of glass with respect to air. Basically, I am trying to measure absolute Ri of glass. Yes or no? 1 minute. Then I'll take it. Absolute Ri of glass I am measuring, right? If I am measuring absolute Ri of glass, my value has to be more than 1 because glass is more denser than air. That means this value that I get has to be greater than 1. The value becomes greater than 1 only when the numerator is bigger than the denominator. My doubt is between air and glass. किसको numerator बनाऊं, किसको denominator बनाऊं? Where does light travel with maximum speed? Air. Air से ज़्यादा speed किसी में नहीं है. So the maximum value I will always put in numerator and the minimum value I'll put in denominator. Means मेरा actual जो फॉर्मूला होना चाहिए था 1/2 होना चाहिए. Hope you understood. Yes, ma'am. Vacuum and air are considered same. जैसे हम लोग बंगालियों में ना एक स्कूल का नाम होता है, घर का नाम होता है हर बंगाली बच्चे का. वो स्कूल में एक नाम होगा, जैसे माय डॉटर प्रज्ञा जिया, तो तब हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रज्ञा विद रिस्पेक्ट टू जिया. स्पीड ऑफ लाइट इन प्रज्ञा 3 लाख, स्पीड ऑफ लाइट इन जिया 3 लाख. प्रज्ञा इज इक्वल टू एयर, जिया इक्वल टू वैक्यूम. हाँ किसी ने, हाँ वो एक ही बात है. चलो प्रज्ञा के घर जाते हैं, नहीं नहीं चलो जिया के घर. चुप, दोनों तो एक ही हैं, एक ही के घर तो जा रहे हैं, बस खत्म. अंडरस्टूड? इससे बढ़िया और क्या एग्जांपल दूं? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? रेसिप्रोकल तो अभी आएंगे, आप टेंशन ना लो, रेसिप्रोकल अभी आएंगे. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, आइए इसको भी मिटाया जाए. अब हम स्पीड की भाषा में लिखते हैं, ठीक है? I'm going to write in terms of speed now because nobody is going to give you problems with sin I, sin R. All problems you're going to get in terms of speed. आइए, eta 2 with respect to 1 is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Have you understood this? Okay, very good. I'm also writing eta 2 with respect to air, which is nothing but eta 2 is speed. So I'm no more writing. मेरा इतना लिखने का ये नहीं है, दर्द हो गया हाथ मेरा. Speed of light in air is c always in optics. It's written as c, and I'm writing this as v2. Understood? What is v2? v2 is speed of light in medium 2. This is v2. And this is v1. Understood? C by v2. And I'm writing one more thing, that is eta 1 means with respect to air, which is nothing but eta 1 is c by v1. Can I write this? Very good. Okay. Now what I'm trying to do here is eta 2 with respect to 1 is equal to what, beta? Eta 2 with respect to 1 is v1 upon v2. If you would have written eta 1 with respect to 2, v2 upon v1, ठीक है? Now इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं v1 by c1
इंटू C1/V2, देखो तो C1 क्या सर, C1 को इंट्रोड्यूस करवाया भाई, इसमें कोई टेंशन है? कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा और मैथमेटिक्स लगाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, C1/V1 इंटू, सॉरी C1 क्या है, C होता है, जेरी दस यू आर एजिंग नाउ, ओके 1 मिनट, ओके दिस आई कैन राइट एज V1/C इंटू C/V2, ओवर एक्साइटेड होने से ऐसे ही होता है, ठीक है, अंडरस्टूड, स्टिल इट रिमेन्स V1, इसको लिख सकते हैं 1/C/V1 इंटू C/V2, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ईटा 1 to 2, ये क्या वैल्यू हो गया बेटा, 1/eta1 and this is what, eta2, क्या हुआ, कुछ हुआ, ऑल ओके। तो फाइनली व्हाट आई कैन राइट, eta2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 कैसा बन गया, दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मूला। देखो तो कहां प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का सर दर्द हो रहा है, somebody has put some balm or something, very nice smell of balm, ये चीज समझ में आया, अच्छा नहीं समझ में आया लगता है, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, आ जाओ, ऐसा नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा हम लोग करते रहेंगे, टाइम ही टाइम है हमारे पास, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये चीज समझ में आया जो लिखा, राइट, आ जाओ, we are trying to see relation of what is the relation between relative refractive index and absolute refractive index. So I am saying this is Indian rupee as compared to Pakistani rupee, ऐसा टाइप, eta2 with respect to eta1, इस चीज को आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे V1/V2, मानते हो कि नहीं, ये ऊपर के डेफिनेशन से, यहां पे थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स की जगलरी कर रहे हैं, V1/V2 को C/C से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना भाई, C डेरी मिल्क किसको दिया, C डेरी मिल्क किसको दिया, इसको कुछ ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिखते हैं V1/C इंटू C/V2, ये भी लिख सकते हैं ना, नो इश्यूज। V1/C क्या होता है, इसको ऐसे लिख लें 1/C/V1 इंटू C/V2। सर आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है with C as numerator and here C was denominator, so I deliberately did this jugglery. Now can I write this as 1/eta1 into eta2, ये लिख सकता हूं, this is nothing but eta2, this is nothing but eta2, this is nothing but eta1, that means relative refractive index of 2 with respect to 1 is equal to absolute refractive index of 2 over, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, हेल्प करेगा आपको, यहां से सब कुछ ही हेल्प करेगा, घर में जाके आज ये सब कोशिश कीजिए, ये सब जो मैं लिखा ना, ये सब कोशिश कीजिए, सर ये सब कहाँ लिखे थे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्लियर। And from here actually everything takes birth. In fact, this formula you can see it in another term also. ये फॉर्मूला को अब थोड़ा बोर्ड मिटाऊं ये वाला, आइए इसको मिटा के देखते हैं, ये फॉर्मूला क्या लिखा हमने, eta2 with respect to 1 is equal to eta2 upon eta1 which is also equal to V1/V2, याद रखिए, गड़बड़ मत कर लीजिएगा, स्पीड होने से जो ऊपर वही, एब्सोल्यूट होने से उल्टा पल्टा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, eta2 upon eta1, अभी थोड़ा फिर मेमोरी वाला बात, हाँ मेमोरी वाली बात में आप क्या करो, आप यहाँ पे एक मन में एक लाइन ड्रॉ कर लो,
मन मन में, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं, आ जाओ और यहाँ पे इक्वल टू डालो और ये 1 ऊपर है ना, 1 ऊपर लिख लिया, नीचे हमने एयर लिख लिया, फिर इनटू, फिर देखो 2 नीचे ही है ना, 2 नीचे और ऊपर एयर, ये पूरा मन मन की बात है, किसी को बोलना नहीं है, मैथ्स में लिखना नहीं है, मन मन की बात। और मन मन की बात में आप जरा देखो, बेसिकली ये और ये कट आउट हो जाता है, तो ये फिर से देखने में कैसा लग रहा है, 1/2 1/2, जैसा आपने लिखा था ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है ना। मन मन की बात है ये, मन की बात। आइए मन की बात से इस चीज को भाई साहब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उल्टा के लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। अभी उल्टा मतलब वी कैन राइट एयर यहां पे ले लेते हैं और यहां पे क्या लेते हैं, यहां पे 1 ले लेते हैं, ठीक है तो बात है। और यहां क्या लेते हैं, बाय द सेम प्रिंसिपल, राइट, एंड यहां पे क्या रखते हैं, यहां पे वही एयर रखते हैं, ईटा और N2 रखते हैं। क्या ये नहीं है, तो वापस आपका फॉर्मूला नहीं बन गया, देखो तो वही फॉर्मूला बन गया, क्लियर है। अभी दुनिया में ससुरा जो प्रॉब्लम दे दो, ग्लास दिस दैट, एंड वी विल डू वन प्रॉब्लम बिफोर वी रिटायर, एवरी आंसर विल बी कमिंग। एक प्रॉब्लम ले लो, हाँ हाँ करना है तो फिर करते हैं ना, नए नजरिए से, आपके पास डेटा है उसका। विल यू बी एबल टू रीड द क्वेश्चन, डू यू हैव द क्वेश्चन विथ यू? No, H2O with ओके, H2O with respect to glass, H2O with respect to glass, डेटा कितना है वो नहीं है ना, some numerical problem, old notes we must have done some problems, get me one numerical data or else I have to pick it up, search and give, तो गूगल मारो ना, कोई लैपटॉप खुला है तो, the refractive index of glass with respect to ऐसे करके कोई भी प्रॉब्लम एक ले लो। नेहा, you had a problem right? what is it? or else you have to हाँ कोई एक प्रॉब्लम ले लो, प्रॉब्लम्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, CBSE ग्रेड 10 मारो आ जाएगा, CBSE ग्रेड 10 प्रॉब्लम्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनी वन प्रॉब्लम, एनीबॉडी you have found one? Yeah, tell me. Okay, let me take that, whatever it is, Neha, don't worry, bolo, the speed of light in vacuum, so C is equal to 3 into 10 to the power 8 meters over second, go ahead. VH2O is equal to 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, okay. Refractive index of water, so forget it, let me be easy question, they have asked you to find you eta H2O, refractive index of water. Refractive index of water is nothing but water when compared with air. That means we are given only speed data, speed data में ऊपर हमेशा ऊपर का डेटा माने C divided by VH2O, और आप करके देखो एयर से वाटर इज डेंसर, 3 को 2.25 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट ज्यादा ही आएगा, हम करेक्ट। लेकिन अगर कोई कहता व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू, देन इट विल कम 0 point something because it follows this rule. This is one formula that you will be using a lot, and another formula that you will be using is eta 1 with respect 2 with respect to 1 is what you were going on saying, reciprocal of eta 1 with, and how that reciprocal comes you have seen now. ये चीज घर में बार बार ऐसा एक प्रॉब्लम निकालो ना, टाइम है अभी भी। कैन एनीवन, इफ यू या सानवी सर्च मारना एक क्वेश्चन, इट विल बी देयर। सानवी बेचारा ऑलरेडी टायर्ड, टाई वाई लगा के, दैट टाई इज दैट फांसी का फंदा जैसा है उसका। जस्ट टाइप ए क्वेश्चन, ग्रेड 10 प्रॉब्लम, यू गॉट अ क्वेश्चन, आप बोलते जाओ वहां से। ओके, विल डू इट, चलो हाँ चलो क्विक क्विक क्विक, हमारा नहीं तो हाँ बोल। The refractive index of glass with respect to air means I can write this as eta glass, no one stops me, is 1.33,
1.65 that of water, and that of water with respect to air is 1.33. Calculate the refractive index of water with respect to glass. हमें ये सॉल्व करना है, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, we don't know anything, ये सॉल्व करना है ना। तो हम क्या करेंगे, मन की बात है भाई, किसी से बताना मत, मन की बात है, मन की बात में हमें निकालना है ईटा H2O with respect to गिलास, है कि नहीं? Have you agreed? Okay, so first we draw the मन का लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर लीजिए भाई साहब, ये है मन का लक्ष्मण रेखा, ठीक है। और आइए इसमें फॉर्मूला डालते जाइए। अब ईटा है, ग्लास है तो ग्लास, नीचे चुपके से, किसी को बताना नहीं है, एयर। फिर क्या करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई का साइन बिठाएंगे, ईटा बिठाएंगे, नीचे H2O है, और इसको क्लियर करने के लिए हम फिर यहां चुपके से एयर बिठा देंगे। क्लियर आया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये चीज, ये तो कोई इशू नहीं है, ये डेटा जो है ये आपको दिया हुआ है, H2O विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है, देखो H2O विथ, तो इसको 1.33 बिठा देंगे H2O विथ। और क्या डेटा दिया है, ये वाला डेटा दिया है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया है भाई साहब। और इतने कितने हैं, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर नीचे है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी चोरी तूने चोरी किया, क्या करेंगे, इधर ग्लास लिखेंगे, इधर एयर लिखेंगे। अगले स्टेप में ये वाला जो डेटा है, ये डेटा है, डाल दो भैया 1.65 और 1.33 का डेटा आ गया तुम्हारा। नाउ जस्ट चेक विच इज अ बिगर फिगर, न्यूमरेटर इज अ बिगर फिगर, डिनोमिनेटर इज अ small, sorry, denominator is a bigger figure, numerator, so this value will always be less than 1, whatever it is less than 1। ये less than 1 आएगा ना, इतना मुंह ऐसा करके क्यों बैठे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? Less than 1, that means what are you trying to find out? You're trying to find water as compared to glass is a rarer medium, denser होता तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आता, और ऐसे भी वाटर में फटाक से जाता है, ग्लास में नहीं जाता है, वाटर इज अ डेंसर मीडियम। अब वो कैसे प्रमाण करेंगे, सर आप ऐसे वाटर बोलने से हो जाता है क्या? जरा देखो, बाप के साथ कंपैरिजन देखो, व्हेन यू कंपेयर विद द बाप, ग्लास इज स्कोरिंग हाउ मच एंड हाउ मच इज वाटर स्कोरिंग, so water is a rarer medium, with the same bap water is rarer, with the same bap glass is denser, so when you compare between these two, ये वही मैं बोल रहा था, the Pakistani rupee is weaker to the US and this is stronger, this is also weaker to the US but partially stronger, so between these two this currency will be stronger। डेटा आ गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं आता है। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप याद कर लोगे ये है, ये है, मैंने कोई याद नहीं किया, एंड बिलीव मी I taught you that month, and today I actually came prepared to teach you chemistry only। acid, bases and salts लिखे। Then suddenly this girl started saying, sir we are doing, she started telling me she was doing refractive index, then I said aha ये तो क्या कर लिया, we are doing refractive index, तो automatic generate हो गया, कोई गलती नहीं, कैसे हो गया? You mean to say I remember this eta 1 2 1 2, but concept should be clear। First is, how is the definition? Refractive index of blah blah with respect to blah blah, with respect माने blah blah को ऊपर बिठाना है, एयर होने से और ऊपर लिखना नहीं है, और जो ऊपर बैठता है लाइट रे वहीं से आता है, बस खत्म। अगर ये तीन चीज आपको क्लियर है और आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप ये जनरेट कर पाएंगे, वरना अभिमन्यु की तरह प्रवेश तो कर जाएंगे पर अंदर वीर गति को प्राप्त होंगे। और इतिहास आपको वीर की तरह याद रखेगा, पता उसे चलता है जिस माँ को जिसने बेटा खोया या जिस औरत ने पति खोया। हम लोग पढ़ते हैं बहुत वीर था, बहुत, जाना ही नहीं था, जाना ही नहीं था उस दिन। हाफ नॉलेज से मत कीजिए, रट्टू मार के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कितने होंगे, गो एंड सर्व द नेट, all questions pertaining to refractive index grade 10, then questions pertaining to comparative relative refractive index grade 10 मत मारो, pdf ICSE questions भी आ जाएंगे, कर लो, सब कर लो। उसके after that if you are getting 0, that means it's not that you didn't understand, you goofed up on some
ऊपर का नीचे लिख दिया या नीचे का ऊपर, दैट्स अ सैड पार्ट, बिकॉज यू आर एज गुड एज, और वो कोई लड़का टुक्का मार के आ गया उसको फुल मार्क्स मिल गया, है ना, वो ज्यादा खराब, राइट। सो व्हाट वी डू,